ओके। आज हम लोग बीस्टेट बी मैथ का ग्रुप बी का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ग्रुप बी का क्वेश्चन एमएसक्यू है, मतलब मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन। ओके, इसका इसका एक से भी ज्यादा ऑप्शन ट्रू हो सकता है। सो we have to handle very seriously this type of question, because एक तो ऑप्शन अगर सही मिल गया तो उसको टिक करके हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। एक से ज्यादा भी ऑप्शन हो सकता है, तो हम लोग को हर एक ऑप्शन अच्छे से ट्राई करना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, क्या बोला है देखिए, लेट एक्स बी इरेशनल नंबर। ओके, लेट एक्स बी एन इरेशनल नंबर if a b c d are rational number। ओके, x को irrational बोला है एंड a b c d को rational number बोला है। ठीक है, such that ax plus b by cx plus d is a irrational number, which of the following must be true। ओके, सो देखिए कैसे करते हैं इसको। सो x is given x is irrational। okay, and ax plus b by cx plus d is rational। okay, एंड ए बी सी डी को रैशनल बोल दिया गया है। सो ये अगर रैशनल होगा, सो लेट दिस इज ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, हम लोग इसको पकड़ लिए, वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर प्राइम टू ईच अदर, इंटीजर प्राइम टू each other। Okay, because we know that every rational number can be written as p by q form where q not equals to 0। ओके, q नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर देखिए ए बी सी डी रैशनल नंबर बोल दिया गया है। ओके, सो दिस इम्प्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सो ए क्यू एक्स प्लस बी क्यू इक्वल्स टू सी पी एक्स प्लस डी पी। दिस इम्प्लाई ए क्यू minus cpx plus bq minus dp equals to 0। Now, okay, a, given that a b c d are all rational, that means from set of rational number, and x is, and p and q also rational because it's an integer, so must be rational। So aq minus cp and bq minus dp also rational, because we know that algebraic or multiplicity and addition or subtraction of rational number is always a rational number, so both are rational number। So as x is irrational, okay, as x is irrational, okay, then so aq minus cp x is also irrational, is also irrational। why, कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? Because we know that the rational multiplicity of a rational number and a irrational number always give a irrational number, so that's why aq minus cpx is irrational, and bq minus cp, this is rational। okay, this part is rational, so so sum of an irrational number and a rational number is 0। This what this imply, rational number is 0। So okay, one implies this, that the
sum of an irrational number and a rational number is 0, but this is not possible. हम लोग को पता है कि irrational number and rational number का sum कभी भी 0 नहीं होता है, but यहाँ पर बोला दिया कि हम लोग को expression आ रहा है कि this is 0. So what will be the only possibility? That they are individually 0. Otherwise, this is not possible, because we know that the sum of an irrational number and a rational number is 0. This is impossible. So therefore, they are individually 0. Therefore, they are individually 0. Individually 0. That is, therefore, AQ minus CP x equals to 0 and BQ minus DP equals to 0. Okay. Now, क्वेश्चन में दिया गया है कि x is irrational number. Okay. So, x not equals to 0, because irrational number कभी भी 0 नहीं हो सकता. Not trivially. So, x is not equals to 0, an irrational number, an irrational number, an irrational number. So, therefore, we have AQ minus CP should 0, and from another part we have BQ minus DP is 0. So, now comes to the first part. हम लोग ax plus b by cx plus d को एक तो रैशनल नंबर बोले हैं, एंड यहाँ पर रैशनल मतलब नॉन ट्रिवियल रैशनल, ट्रिवियल रैशनल नहीं, मतलब जीरो कभी भी नहीं होगा. सो दिस पॉसिबिलिटी होल्ड ओनली व्हेन p and q both are non zero, otherwise this is not possible. ओके, सो यहाँ पर pq का सॉल्यूशन हम लोग को निकालना है. सो फ्रॉम द थ्योरी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, this system this system of this system of equation of p and q will have non-trivial solution. बिकॉज हम लोग को पता है यहाँ पर पी को जीरो दिखा रहा है, बट जीरो नहीं है. सो जीरो का छोड़ के अगर कोई सॉल्यूशन हम लोग को चाहिए दिस टाइप ऑफ सिस्टम में, तो हम उसको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे. सो विल हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली व्हेन कंडीशन क्या है, द कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट शुड बी जीरो. सो व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट, दिस इज a minus c and b minus d should be equal to 0. Okay, so this imply minus AD plus BC equals to 0. Therefore, AD should be equal to BC. So this is our derived condition. Okay, देखते हैं ऑप्शन में ऐसा कंडीशन दिया गया है कि नहीं. ओके, ऑप्शन ए AD माइनस BC दिया गया है, ये देखिए दिस ऑप्शन. सो यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट. हम लोग एक एक करके ऑप्शन को नलिफाई भी कर सकते हैं. मतलब एज दिस इज एमएसक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन, सो यू हैव टू गो थ्रू विथ ऑल ऑप्शंस. हम किसी को छोड़ नहीं सकते. तो ये भी कंडीशन तो हम लोग को डिराइव नहीं हुआ ए बी सी डी. ओके, ए सी बी डी, तो इस टाइप में सिर्फ यही कंडीशन हम लोग को सेटिस्फाई कर रहा है. सो ए इज ट्रू. नाउ अगर ए इक्वल टू डी इक्वल टू जीरो होगा, तो इसमें अगर हम लोग इसको प्लेस करेंगे, सो given that a and d equals to 0, so then ax plus b by cx plus d will becomes ad 0 बोला है, that means b by cx, and b by c is a rational number and 1 by x is irrational. Okay, then multiply of rational and irrational will give a irrational, but यहाँ पर दिया गया है कि ax plus b by cx plus d is a rational number, so this is also wrong. Okay, so option A is the only correct option. So A true. A true. Thank you.